देखो बच्चों, हम क्लास 8th का चैप्टर 7 जो वेवर्स आयरन स्मेल्टर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स, ये हमने इसके 7 क्वेश्चन किए हैं हमने। अब हम 8th क्वेश्चन क्या है देखिए। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन इफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। देखो, डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में लगाई गई थी, उससे कैसे इफेक्ट हुआ इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडिया में। Effects of the development of cotton textile in Britain on the textile production in India. Competition: Indian textile has to compete with British textiles in European and American markets. इतना compete करना था, जो इंडियन टेक्सटाइल था उसको ब्रिटिश जो टेक्सटाइल उनके साथ compete करना था, मुकाबला करना था इस फील्ड में। हाई ड्यूटीज एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट ड्यू टू द हाई। उनको जो इंडिया के जो टेक्सटाइल थे उन पर ड्यूटीज़ लगाएगी, हेवी ड्यूटी लगाएगी, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। कैप्चर ऑफ फॉरेन मार्केट्स बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल्स आउटसेट इंडियन textiles from their traditional markets, thereby throwing thousands of Indian weavers out of employment. The English and European companies stopped buying Indian textile, and their agents no longer gave out advance to weavers to secure supplies. Capture of the Indian market by the 1930s, British cotton क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। जो ब्रिटिश जो है उन्होंने कैप्चर किया था इंडियन मार्केट, वहाँ के जो इंडियन मार्केट ब्रिटिश का कॉटन क्लॉथ सारा इंडिया मार्केट में आ गया। बाय दिस ग्रेटली इफेक्टेड बोथ द बाय दिस इन 80s 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन क्लॉथ्स worn by Indians were made of cloth produced in Britain। 1880 के दशक में जो पूरा जो लगभग तिहाई हिस्सा जो हिंदुस्तान का था वो ब्रिटेन के कपड़े पहनता था। This greatly affected both the weavers and the spinners. Thus, Indian textile declined in the 19th century, and thousands of Indian weavers and spinners lost their livelihood. उसी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल को बहुत उनको नुकसान हुआ, अपने जॉब उनको खोना पड़ा, इस वजह से नौकरियां चली गई, लाइवलीहुड खाना जिंदा रहने की जो उनकी तो वो भी चली गई, कमाने की जो सब कमाए जो कमाते थे वो सब चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन 19th। फिर इंडियन आयरन स्मेल्टिंग जो है वो भी कैसे डिक्लाइन हुआ, वो कम हुआ कैसे 19th century में। द इंडियन आयरन स्मेल्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन इन 19th century फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। द फॉरेस्ट लॉज implemented by the colonial administration prevented the free movement of people in reserved forests. Charcoal, an essential ingredient in the iron smelting process, could before not be obtained easily। मतलब चारकोल पे बैन लगाया, वो easily नहीं किया जा सकता था। When and some areas government did grant access to the forest, the island smelters were in return required to pay a very high amount of tax to the forest department for every furnace they used। This reduced their home income। उनको टैक्स देना पड़ता था। By the 19th century, iron and steel were being imported from Britain। Ironsmiths began using the imported iron to manufacture utensils and implements। They reduced demand for iron produced by local smelters। वो उनको बाहर से import करते थे, वो इससे local demand जो उसकी ख़त्म हो गई। In the late 19th century, a series of families devastated the dry tracts of India। As a result, many of the local smiths stopped work and deserted their village and migrated looking for the other। देखो, इसकी वजह से जब वो बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करने लगे तो यहाँ की चीज़ें, यहाँ के स्मेल्टर्स, तो वो उन पे कम मतलब उनकी जो चीज़ें वो उन्होंने फिर अपना बंद ही कर दिया ये काम करना आहिस्ता आहिस्ता।